Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is changes around us. The learning objectives, reversible and irreversible changes, external factors of changes. Changes take place all around us all the time, like a turning of day into night, changing of seasons, ripening of fruits, cooking of food, melting of ice and so on. However, all the changes are not the same. Some changes take place on their own, while some changes occur due to some external factors. In some changes, we get back the same original substance and cannot get them back in others. The changes can be of different types. Some changes can be reversed, that is, the original substance can be recovered. Stretch a rubber band, the rubber band gets longer. Leave the rubber band on the table, the rubber band gets back to its size. Take a ball of dough and give it a shape. It can be given any shape. Give shape of your choice and leave it on the table. You can get back the dough from this shape. अब आपके क्या होते हैं, आपको बहुत सारी चेंजेस आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगी. सुबह होती है, फिर दिन होती है, फिर रात होती है, उजाला होता है, अंधेरा होता है, सीजन चेंज होते हैं. सो दीज आर सर्टेन चेंजेस जो आपको हर टाइम देखने को मिलते हैं. अब इनमें से कुछ होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि उनको आप बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन ला सकते हैं. एंड देन यू हैव सर्टेन इररिवर्सिबल चेंजेस जिनको आप बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन नहीं ला सकते हैं. Now, while in some other changes we do not get back the original substance, make a chapati from this flour. You cannot get back the dough from chapati. Certainly not. We also cannot change the shape of chapati. अब डो आपने बना दिया, चपाती उससे बना ली, पका भी लिया. अब इस चपाती की लाख कोशिश कर लीजिए, वापस आटा तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा. Irreversible change. Then light a candle and fix it on the ground. Observe the changes over a certain period of time and the wick of the candle burns. We cannot get back the candle. मोमबत्ती जलती है, जलाते रहो, जलते जलते छोटी हो जाएगी, वापस आपको सेम कैंडल मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी. Again, irreversible change. Now let's study about reversible and irreversible changes. Number one, irreversible change. The change which can be reversed by reversing the conditions is called a reversible change. For example, melting, boiling, evaporation and condensation all are reversible changes. So the ice melts into water. On boiling, water evaporates and condenses into water on cooling. Thus the states of water change but the original सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. अब आपका रिवर्सिबल चेंज में आ जाता है जहां पे आप ओरिजिनल स्टेट किसी भी मटेरियल की ऑब्टेन कर सकते हो इवन आफ्टर द चेंज हैज टेकन प्लेस. फॉर एग्जांपल, पानी है, फ्रीज कर देंगे, क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा. उसी को बाहर लेकर आइए, वापस मेल्ट हो जाएगा. अब इसको आप हीट करने लग जाओगे, इवेपोरेट होने लग जाएगा. उसको ठंडा करोगे, कंडेंस होने लग जाएगा. तो ओरिजिनल स्टेट आपका पानी ही रहा, चेंजेस हुए शेप्स में, बट अगेन सब्सटेंस वही रहा, कोई इंटरनल चेंज आपको देखने को नहीं मिला. हेंस दिस इज द रिवर्सिबल चेंज. सम अदर रिवर्सिबल चेंजेस आर blowing off an electric bulb, stretching a rubber band, plowing a field, folding a paper, blowing a balloon, stretching a spring. A reversible change is a temporary change. There is not any change in the internal properties of a substance undergoing reversible change. और तो reversible change आपके temporary changes में आते हैं. Then you have the irreversible change. The change which cannot be reversed is called an irreversible change. For example, burning of paper, wood, candle, etc. Paper when burned gives ash and smoke. We cannot obtain paper back from the ash and the smoke. In the same way, the wood or candle cannot be obtained back once they are burnt. अब irreversible changes में क्या आता है? Once the change has been done, you cannot get back the original material at any cost. मोमबत्ती आपने जला दी, जल के वो छोटी हो चुकी है, वापस उसको आप बड़ा नहीं कर सकते हो. So this is irreversible change. Some of the other irreversible changes are aging of living beings. We cannot make an old man a child by any method. Change of milk into curd. We cannot get back milk from the curd. Growth of plants. A tree cannot be changed into plant. Rusting of iron. You cannot get back iron from the rusted iron by a simple process. अब आपका लोग human beings पहले बच्चे होते हैं, फिर एडल्ट में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं. अब उसी बुजुर्ग को उसी लाइफ टाइम में तो एटलीस्ट आप बच्चा वापस नहीं बना सकते हो. दही आपने जमा दी, उस दही से आपको दूध नहीं मिल सकती है. सो these are irreversible changes. An irreversible change is a permanent change. A substance undergoing irreversible change has different properties from its original form. परमानेंट चेंज होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड सेकंड जो नया आपका सब्सटेंस मिलता है उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है. Now an activity to observe the reversible change in a balloon by blowing air into it and then letting the air escape from it. Take a balloon and blow air into it. Observe what happens. You will observe that the shape and size of the balloon changes. Now let the air escape and
escape out of the balloon. Observe what happens. You will now observe that balloon gets back to its original shape and size. अब balloon लीजिए, हवा भरिए, बड़ा हो जाएगा, हवा उस balloon से बाहर निकाल दीजिए, वापस अपनी original state में आ जाएगा. This is reversible change and a temporary change. Then you have another activity to observe the irreversible change in the balloon by first blowing air into it and then bursting it. Take the same balloon that you took in activity 1 and blow air into it and tie its mouth with a string tightly. Prick it with a needle. Observe what happens. You will observe that the balloon burst. Now it cannot get back to its original shape and size. अब same balloon लीजिए जो activity 1 में लिया था, फुलाइए, needle की वजह से prick कर करके उसको फोड़ दीजिए. अब ये फूटे हुए बलून से आप वापस इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हो. So this is an irreversible change. Then you have another activity to observe the reversible change of dough to chapati and chapati back to dough. Ask your mother for some dough. Take a small amount of dough and make a ball. Now roll out a chapati. Observe what happens. You have changed the shape of the dough. Now take the chapati and make a ball again. Observe what happens. You will get back the ball of a dough. अब एक आटा लीजिए, थोड़ा सा उसको तोड़िए, अलग करिए और उसको गोल गोल करने के बाद चपाती के फॉर्म में ले आइए. अब चपाती हो गई, चपाती को वापस से बॉल में कन्वर्ट कर दीजिए, वापस वो आपका डो बन जाएगा. तो ये आपका यहाँ तक तो एटलीस्ट रिवर्सिबल है. Another activity to observe irreversible change by first rolling a chapati from dough and then cooking it. Take a small amount of wheat flour dough, make a ball and roll out a chapati. Cook the chapati on a griddle. Observe what happens. You will get the cooked chapati, but now you cannot get back the ball of wheat flour dough. अब उसी से आपको क्या करना है, वापस चपाती बनानी है और अब इसको पका देना है. अब पकाने के बाद आपकी चपाती को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब वो आपके डो में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. तो पहली एक्टिविटी में रिवर्सिबल था, दूसरे वाले में पकाने के बाद ये इररिवर्सिबल हो गया. Now let's see the differences between a reversible and an irreversible change. Reversible and irreversible changes differ from each other in many ways. Let's look at the table. Reversible change, it is a reversible change. Only external properties such as color, shape, size or state changes and internal properties remain unchanged. Now no new substance is formed. The original form of the substance can be obtained easily by reversing the condition and it is a temporary change. The reversible change में आपका कोई नया substance नहीं बनता है. Appearance, color, हद से हद इतनी चीज़ें change होती हैं and इसको आप ये वापस से original state में लेकर आ सकते हो. That means temporary change है. Then you have irreversible change. In an irreversible change, the internal properties of the substances are changed. One or more new substances are formed. The original substance cannot be obtained by any method and it is a permanent change. अब irreversible change में आपका क्या होता है, नया substance form होता है. Properties इसके original material से entirely different हो सकती हैं और ये आपका permanent change में आता है. That means इसको आप reverse नहीं कर सकते हैं. Now check yourself. Some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change is reversible or irreversible, and this you have to do on your own. Now you have external factors of changes. Some changes take place on their own while some changes are caused by some external forces, for example by heating. Heating a substance may also cause change. Whenever an object or substance is heated, it gets affected in one or the other way. For example, number 1, certain substances simply get hot on heating and do not change in any other way. When you cook any dish in a pressure cooker, the cooker and its handle get hot, but the shape remains unchanged. पहला process है heating का. heating में भी कुछ चीज़ें तो आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है अपीयरेंस में भी, बट कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कुकर में आप कुछ भी अंदर डालिए, अंदर का मटेरियल तो हीट होने से चेंज होगा, बट जो आपका बाहर कुकर का हैंडल है या बाहर का सब्सटेंस है वो हीट होने पे भी चेंज नहीं होता है. When you pour hot tea in the cup, the rim of the cup becomes warm, but its shape or size does not change. And second, some substances such as metals expand on heating. That is, on heating there is an increase in their size. On cooling they return to their original size. अब कभी कभी heat करने पे कुछ substances आपके expand कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, cool करेंगे वो वहीं पे छोटे भी हो जाते हैं. This is the reason why small gaps are left between the railway tracks. These gaps, called the expansion gaps, allow the rail to expand in hot weather. If the gaps are not left or are very small, the railway lines can bend. अब इसी यही रीज़न होता है, जो आपका आयन होता है हीट करने पे एक्सपैंड कर जाता है. तो आपकी रेलवे लाइंस में जो ट्रैक्स होते हैं उसके बीच में हमेशा गैप्स होते हैं, ताकि समझ में जब आपकी बहुत ज़्यादा हीट हो तो एक्सपैंड तो वो करेंगे ही. अब अगर स्पेसिंग बीच में नहीं होगी तो ये आपके ट्रैक्स बेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन आपकी डीरेल भी हो सकती है. दैट इज वाई रेलवे ट्रैक्स में हमेशा गैप्स होते हैं.
A blacksmith uses such changes to make iron tools used for various purposes like digging, weeding, etc. The iron blade of these tools has an iron ring in which the wooden handle is fixed. Generally, the ring is smaller in size than the wooden handle. The ring is heated to make it slightly larger and fixed into the handle. On cooling, the ring contracts and fits tightly on the handle. Such a change is also used for fitting a metal rim on wooden wheel of a cart. Again, the metallic rim is heated. It expands and fits into the wooden wheel that is slightly larger than rim. On pouring water on the rim, it contracts and fits tightly onto the wheel. अब आपके जो आपका blacksmith होता है, इसी का यूज करते हुए, आपका ये चेंजेस का ही यूज करते हुए अलग अलग आयन प्रोडक्ट्स ये बनाता है. Then some substances when heated get hot. If heating is continued, these start burning and certain substances burn faster than others. अब कुछ चीज़ें excessive heating पे जलने लग जाती हैं और कुछ अलग अलग जो आपका burning rate होता है, it is different from each other. It can differ from material to material. Then dry grass or scrap of paper burns faster than a log of wood, and wood and coal need much longer heating before they start burning. Then by force. A force is push or a pull acting on a body which tends to change its state of rest or motion. A force can change the shape of size or size of any object or substance. When an inflated balloon is pressed between two hands, its shape and size change. When a bag of wheat flour is pressed, its shape changes. In fact, it can be given any shape. When a spring is pulled, its shape and size change. When you squeeze a toothpaste tube, अब फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हो तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल, चपाती बनाने के लिए जो डो आप यूज करते हो उसमें भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है. And then lastly, by mixing. Mixing of two or more things together can also lead to changes. Sugar when mixed with water disappears and water tastes sweet. No solid crystals of sugar are seen there and this change is called dissolution. अब mixing, एक पानी में आप चीनी घोल देंगे, थोड़ी देर के बाद चीनी दिखना भी बंद हो जाएगी, पानी के कलर में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट पानी का टेस्ट बदल जाएगा, पानी स्वीट हो जाएगा. सो बाय मिक्सिंग, तो इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन. Now, glimpse of chapter, reversible change, a change that can be reversed by reversing the conditions. Irreversible change, a change that cannot be reversed. Dissolution, a process by which a solid, gas or liquid is dispersed homogeneously in a liquid or gas. And then the summary. We observe many changes around us. Some of them take place on their own, while some occur due to external reasons. Some changes only affect the size, shape and color, etc., whereas in some other changes, one more new substances are formed. Some changes can be reversed, whereas some others cannot be reversed. Changes can be caused in many ways, such as by mixing, by heating, by mixing and heating, and by applying force. तो किस तरीके से आपके changes देखे जाते हैं around your environment, reversible, irreversible, क्या इनमें differences होते हैं, is what we have studied in this chapter. With that, we are done with this chapter. Go through this chapter once again properly, and the exercise questions, please do it yourselves.